हेलो. ओके, डन है सर. हेलो एवरीवन. हाउस लाइफ? हाउस एवरीथिंग गोइंग इन योर लाइफ? So welcome to the webinar. Whatever queries you have, feel free to ask. Okay. Recording in progress. Simultaneously we are streaming this webinar from 3-4 platforms. So I'll read chats from all of them, right? सर क्यूए समझ में नहीं आ रहा है. आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? करेंगे उस पर बात आज. ठीक है, we'll talk about that. Hello, hi, hello everyone. Hello सृष्टि. मॉक्स कब देने चाहिए? मॉक्स कब देने चाहिए? और देखो, मॉक्स जब आपका टेक्निकली अगर बात करूं मैं, तो मॉक्स आपको देने चाहिए और जब आपके 2 मेजर वर्टिकल फिनिश हो जाए. क्यूए में बात करेंगे अगर, तो 2 मेजर वर्टिकल्स, अलजेब्रा एंड एनीवन ऑफ नो नॉट अलजेब्रा, अर्थमेटिक एंड एनीवन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. अगर ये फिनिश हो गया, उसके बाद यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स. ओके, उसके बाद यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स. अच्छा सर, विदाउट जूम ऐप से नहीं हो रहा है. ओह, विदाउट जूम, जूम पे हो रहा है ना बेटा. जूम पे आई हैव स्टूडेंट्स लाइव. सिया, जूम पे हो रहा है, ऐसा नहीं है. सर 100% लेकर आऊंगा तो IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है. देखो, 100% इज डेफिनेटली अ ग्रेट अचीवमेंट, नो डाउट इन दैट, बट 100% मतलब IIM अहमदाबाद में गारंटी नहीं है यार एडमिशन. IIM अहमदाबाद लुक्स बियॉन्ड 100%. आपका सर बियॉन्ड 100% मतलब क्या सर? अब 105% लेकर आ जाए क्या? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. कहने का मतलब वो नहीं है. बट जो IIM अहमदाबाद या टॉप बी स्कूल का जो अपना ये है ना, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मुझे देखने दो जूम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ठीक है. IIM अहमदाबाद में जो एडमिशन है ना टॉप बी स्कूल्स में, उसमें अपार्ट फ्रॉम जो कैट स्कोर, हाँ, अपार्ट फ्रॉम कैट स्कोर, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस. PI में दे चेक इफ यू आर राइट फिट फॉर द प्रोग्राम और नॉट. आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं, कम्युनिकेशन चेक करते हैं, आपने कोई कम्युनिटी सर्विस करी है क्या. डाइवर्सिटी दे चेक कि आप इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर है, फीमेल है, मेल है, विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर फ्रॉम. सो बहुत सारे फैक्टर्स है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन माय पास्ट. आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन माय पास्ट. ओके, मे बी तो इधर इधर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन द पास्ट हु हैव स्कोर्ड 10.9798 percentile and have not received calls from any of the IIMs. I have seen that. I have seen that. एग्जीक्यूटिव MBA के बारे में क्या जानना है? अभी देखो, एग्जीक्यूटिव MBA इज well, तो first of all, it's not definitely 1 year program. It could be 1 year, 2 year program. Depends on different institutions. And main, the target audience is those who have 5 to 15 years of experience, 5 years of experience at least. In some cases 4 years, but 5 is what all the institutions expect for. तो एक मिनट. ओके,
My voice is breaking. Is it? देवेंद्र says voice is breaking. देखते हैं, ठीक है. एंड टेक्निकली 1 से 2 साल का ड्यूरेशन होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए का भी. लाइक 1 साल का क्यों रखते हैं? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सम अचीवमेंट्स इन योर करियर, आपको ऑलरेडी नेटवर्किंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है. तो इसके लिए कभी कभी 1 साल का रखते हैं, कभी कभी मोस्टली 1 साल का रखते हैं, फिर 2 साल का भी होता है. I'm aiming for FMS Delhi. So there are any specific things to keep in mind? Is FMS Delhi, FMS Delhi. FMS Delhi, assuming that you are from general category, score 99 plus percentile. Academics, FMS does not focuses on the academics. Academics super FMS focus nahi karti hai. That is one good thing about FMS. If you have got decent CAT percentile, so they give fair chances in PI and group discussion round. So that's it. Score. The only thing, score. CAT percentile लेकर आओ 99 प्लस. एंड अगर आप जेम हो, जनरल इंजीनियर मेल हो, तो 99.4, 99.5. बट व्हेन यू आर टारगेटिंग, देखो राइट नाउ यू हैव 5 months ऑफ द टाइम लेफ्ट. उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं. मीनवाइल इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, कीप ऑन putting it in the comments. Okay. And आपके पास 5 months है ना, तो 5 months, 5.5 months as I'm speaking. तो first thing you keep in mind कि now you don't have time to waste, you don't have time to wander here and there. Okay, कि अभी सर प्रिपेयर करेंगे, एडमिशन लेंगे, कहीं भी एडमिशन लेना है लो. क्योंकि अब अगर स्टिल इफ यू आर सर्चिंग हियर एंड देयर, गोइंग ऑन जगलिंग ऑन यूट्यूब वीडियोस हियर एंड देयर, which means you need guidance, you need mentorship. I'm not saying कि टेक्स्ट बुक से ही ले लो. We are very good in this field, we have top educators, we have everything, but from wherever you are satisfied, take admission, start preparing. It's very important because 5.5 months is cut to cut time. If you're starting from scratch, assuming you are an average student, if you're starting from scratch, it takes 5.5 to 6 months to prepare. Nobody can say that I could prepare in 2, 3, 4 months. You could if you have already prepared for last year, and maybe you were a very good student, outstanding student throughout your academics, throughout your 10th and 12th. That may be the case, but that is exception. 0.1% hardly. Considering most of us are graduates, have not been touch of mathematics since last 4 or 5 years, or let us say DLR is new to everybody. You need enough practice. You need to brush up your concepts, enough practice. 5.5 months it will take. Sia on YouTube says that my profile is 8.5, 7.59. Yes, it is very good profile. I won't say too good, but good enough. Sia, it's good enough, beta. ग्रेजुएशन किस फील्ड में है बस ये बता दो. इफ इट इज नॉट इंजीनियरिंग, इट्स वेरी गुड. ओके, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा. आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन. सो व्हाट दिस स्क्रीन, I'll show you I'll show you the CAT syllabus. Okay, I'll show you the CAT syllabus. CAT syllabus भी है इसमें. CAT का syllabus आगे है. ये तो CAT का syllabus है QA का. I have brought the syllabus of QA as well as I have brought. Very good, Hasia. That works. That's perfect. Okay, I've got the syllabus for QA. Okay, five modules: arithmetic, algebra, geometry, number system, and modern mathematics. And tentatively, this is the syllabus. Okay, sir, how much time and what should be my strategy? I mean, in next 5 months. तो देखो, your preparation has to be in phases. इसमें तो कोई doubt नहीं है. You should be preparing in phases. Different phase में prepare करो. I have figured out 3 phases and you are aware of the phases, ठीक है? But it's time to work. Phase number 1 क्या है बेटा? Phase number 1 is कि आप ये जो syllabus है ना, इस syllabus को
उड़ती नजर से कंप्लीट करो इन 2.5 months. नाउ फ्रॉम नाउ 2.5 months, 75 to 80 days, max 3 months. 3 months में कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. व्हेन आई से एंटायर सिलेबस, व्हाट डू आई मीन? जैसे अर्थमेटिक है, परसेंटेजेस इज अ टॉपिक. Percentages is a topic. Take percentages, read the basic concepts. If you are enrolled somewhere, तो अगर आप कहीं enrolled हो तब तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा. Just follow the classes. If you are enrolled anywhere, just follow the classes. Okay. Before next class, deadline के पहले complete everything that is given. If you are working on your own, अगर आप self prepare कर रहे हो, तो take any topic percentages, formula देखो, solve 50, 60, 70 questions. Move to the next topic, formula देखो, सारे concept देखो, solve 50, 60, 70 questions. Next topic, formula देखो, solve 50, 60, 70 questions. Sir, 50, 60, 70 questions are enough. They are enough, good enough number. It is good enough number to understand the application of all the concepts that we have learned. Right? You need not to be the master of any particular topic या master of quant. आपका वो टारगेट नहीं है ना कि क्वांट में मुझे मास्टर होना है. मैं टेलीग्राम पे 10 ग्रुप में हूँ, 10 चैनल पे हूँ, 10 ग्रुप में हूँ. हर एक क्वेश्चन जो भी कोई बच्चा डाल रहा है, आई शुड बी केपेबल ऑफ सॉल्विंग दैट. ये आपका एजेंडा नहीं है. योर एजेंडा इज स्कोरिंग सम रियल नाइस परसेंटाइल इन एग्जामिनेशन. ओके, क्वांट हैज 66 मार्क्स, 22 क्वेश्चन, 66 मार्क्स. इन बैक ऑफ योर माइंड यू शुड बी अवेयर कि आपको कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आने वाले हैं. ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आने वाले हैं. आई विल शो यू द टेबल फॉर दैट एज वेल. मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, गाइस कीप इन माइंड, 99 परसेंटाइल लाने के लिए 2024 में सी द चार्ट, सी द टेबल. ओके, 99 परसेंटाइल के लिए यू नीड टू गेट ओनली 33 मार्क्स, which is 50% of the paper needs to be solved to get 99 percentile in quant. Keeping this in mind, you should be making your strategy. If you're starting now, go for geometry, go for arithmetic, go for algebra, go for geometry. Even if you complete these three topics, these three modules, you have covered 80% to 85% of the syllabus of QA. Right? Again, check this chart carefully. 100 percentile के लिए you need close to 60 marks, but you need not to be a master. Your target is not getting 100 percentile, right? In quant, target तो 100 percentile है, but quant में नहीं. You can score 100 percentile overall even if you score 99.5, 99.7 in quant. DILR है और verbal है. Okay? So guys, focus on this. क्या marks आपको चाहिए, इसके हिसाब से strategy बनाओ. Weightage, I'll show you the weightage section wise, module wise. Check this. Another very important data. Just a sec. Okay, just a sec. I want to share it again. Sure. Now this is another very important. Where is it? Okay. देखो, check this out. Arithmetic, algebra and geometry. They are 17 to 80 questions out of 22 questions. So अगर आप इन 17-18 क्वेश्चन पे भी फोकस करोगे ना, you will end solving 12-13 questions, which is 99.5, 99.7 percentile in QA. तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि शुरू के 3 महीने में, अभी 3 months from now, मास्टर अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री. Along with that, sir, DILR में क्या करेंगे? So DILR का सिलेबस I'll show. I have gotten the syllabus for DILR as well. देखो, DILR का एक स्टैंडर्ड सिलेबस looks like this. DILR के साथ the problem is there is no well-defined syllabus. You won't find well-defined syllabus for DILR. What do you mean by we don't have any well-defined syllabus? The thing is कि DILR में is what? DILR is what? DILR is something where they check your logical and analytical skills, on the spot thinking. So they create questions. It could be from any genre. They could ask anything. Mostly the questions are in form of puzzles. इसीलिए you check, there are multiple books in the market. There are institutions who have their own material.
कहीं आपको क्वांट में यू विल सी वेल डिफाइंड सिलेबस, परसेंटेजेस एंड देन रेशियो प्रोपोर्शन एंड देन partnership, simple and compound interest, profit loss, you'll see well defined syllabus. But DLR में you'll find कि सबका जो content है ना, it is somewhat different, it's not same. Okay, आप देखो सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, सारे बुक्स, सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, सबका आप कंटेंट देखोगे ना, तो इवन द हेडिंग इज आल्सो डिफरेंट 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 डिफरेंट. एवरीबॉडी हैज मेड डीएलआर सिलेबस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, कैसा क्वेश्चन आ रहा है. सो एक स्टैंडर्ड, एक बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो सिलेबस है, आई एम showing in front of you. This is something जहां से CAT loves to ask questions. DI में they ask questions from table, bar graph, line graph, pie chart, spider graph, sunburst graph, miscellaneous graph. Maxima, minima, games and tournaments, routes and networks, caselets, LR based DI. LR में फिर arrangements is there, distribution is there, comparison is there, scheduling is there. Sir, sir, will solving all, array, oh, what a good question. What a good idea you have given. What a Nihar, I'll love to answer that question. Nihar says that, sir, solving PYQs repeatedly will be helpful. Array, that is very much helpful. It's all about confidence. It's all about confidence. You have covered the syllabus. You are aware of the syllabus. You are solving PYQs again and again from 2017 to 2024. आपको पता है कि क्वाड्रेटिक का औकात क्या है. Let's be very honest. You know कि geometry से what could they ask. When you solve PYQs repeatedly, now you come to know that these questions are from the concepts that we have learned. These questions are from this particular circle only. I have to be master in this circle only. This boosts your confidence, and when it boosts your confidence, na, you start thinking concepts in the questions, new questions as well. You start thinking, understanding the application. It's very important. Guys, we faculties, most of the faculties, I'm not talking about myself only, most of the faculties, we have been teaching for a pretty long period of time. And now whenever a new question comes in front of us ना, तो हम लोग सोचता है कि अरे क्या लग रहा है इधर. मतलब we don't think like कि हमसे नहीं होगा. We never think कि हमसे नहीं होगा. We only, अगर नहीं भी हुआ तो लास्ट में भी से यार मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, सब तो लगा के देख लिया, क्या मिस हो रहा है. So this confidence level when you have now, you start attempting 100% of the questions and you start getting 90-95% of them right. Solving PYQs repeatedly will help you a lot. How to get practice questions for DILR. Vanshika says how to get practice questions from DILR. Now, if I were a student and if I would have been left with 5 months, what I would have done again, कि सबसे पहले assuming that I have solved 10 to 15 questions from each of these topics, जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, right? Tables, bar graph, line graph, pie chart, हर एक टॉपिक पे 5-7-10 क्वेश्चन I have solved, not more than that. ऐसा नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा पे I am solving like 50 questions. You won't find 50 questions. You don't need to solve 50 questions. ठीक है? Assuming in first go, I have solved 5-10 questions only to understand the basic interpretation of the statements what is given. अगर वो सब हो गया ना first stage, it will take you 1.5 to 2 months. After that, if I were a student, I would have gone for mocks, old mocks, various institutes के पुराने mocks से I would have taken the questions. Okay, because market में DILR के लिए there is very little good content available. Okay, it's very little. So if I were a student, मैं क्या करता कि जो बहुत सारे institutions है, different institutions, and purane mocks, I would have gathered old mocks from somewhere, or I would have enrolled somewhere jahan pe you have ample number of mocks. We have ample number of mocks, but I'm not talking about textbook right now. We have everything, but I am talking in a general perspective. So mocks ke questions, I would have attempted them without any time limitation, assuming I'm not attempting a mock. The questions are from mocks, but not I'm giving some limited period of time to attempt those. Question लिया, solve किया, कितना भी time लगा, दूसरा question लिया, solve किया. Old year mocks, old mocks.
of different institutes is what I would recommend here. हाय, अर्थमेटिक डिफिकल्ट लगता है, छोड़ दूं क्या? अर्थमेटिक डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, अर्थमेटिक यू डोंट हैव टू स्किप अर्थमेटिक. अर्थमेटिक इज द बैकबोन. अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा आपको करना है. देयर इज नो ऑप्शन टू दैट. मॉक्स कितने लगाए? देखो, मॉक्स कब लगाए? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. व्हेन यू हैव कवर्ड एटलीस्ट 2 वर्टिकल्स इन क्वांट and at least 60% of the syllabus in DILR, and according proportionally you have covered enough syllabus in VARC 60 to 70%, then you should start attempting mocks. Day 1 से attempting mocks I don't think is a good idea. एक आधा mock दे दो to understand where you stand, but day 1 से attempting mocks I don't feel is a good idea. You should start attempting mocks at least 2.5 months after your preparation. कम से कम 2-2.5 महीने के बाद. यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टुडे, 2-2.5 महीने में you would have covered 50-60% of the syllabus at least. Then you should start attempting mock side by side. Initially the frequency should be low. In a month we have only 5 months left. ठीक है, तो फिर थर्ड मंथ में you should be giving 3-4 mocks, and लास्ट के 2 मंथ में the D month जो है अपना, उसमें you should be attempting 8 to 10 mocks. Every third, fourth day, you should be giving a mock. Feel free to ask anything else you have to ask. कुछ भी पूछना है तो पूछो बिंदास. सर कितने क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर से? ट्रायल एंड एरर के भरोसे मत जाओ. देखो, चैलेंजेस का मेरे पास एक स्लाइड है, आई विल शो यू दैट. Now they have increased the variable based question. Okay, and from 2021 2022 onwards you will observe कि जो trial and error वाले questions है ना, they have reduced in actual examination. Okay, so trial and error के भरोसे you can hardly solve एक या दो question. Okay, you will hardly solve एक या दो question. तो ट्रायल एंड एरर के भरोसे मत जाओ. आई मीन क्वांट में सिर्फ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा के साथ 99 परसेंटाइल कर सकते हैं. क्वांट में देखो, 99 परसेंटाइल के लिए यू नीड टू स्कोर 33 मार्क्स, राइट? 99 परसेंटाइल के लिए यू नीड टू स्कोर हाउ मेनी मार्क्स? कहाँ गया वो अपना? हाँ, जस्ट अ सेक बेटा. देखो, यू कैन सी ऑन द चार्ट कि 99 परसेंटाइल के लिए यू नीड 33 मार्क्स के आसपास. ओके, कर सकते हो ना? 33, 11 क्वेश्चंस. लेट्स से इन्फ्लेशन आ गया एग्जाम में भी, तो 12 क्वेश्चंस. How many questions you get from arithmetic and algebra? Last year there were 16-17 questions solely from arithmetic and algebra. अगर आपने 80% accuracy भी maintain करी, और 16 questions का 80% is how much? 12.8 होता है. 13 questions अगर आपने correct करा, you are somewhere around 99.5, 99.6 percentile. It's truly possible. It's truly possible, but I strongly recommend, if you are focusing more on arithmetic and algebra, na, do not ignore geometry, number system and modern mathematics. उनका ओवरव्यू लेकर जाओ. ओवरव्यू लेकर जाना है मतलब don't solve enough number of questions. Don't solve enough number of questions. Solve जैसे if you are solving, let's say 70-80 questions in arithmetic का कोई topic, solve 15 questions in geometry का particular topic. Triangle पे 15, circle पे 15, quadrilateral पे 15, mensuration में volume based पे 10-15, not more than that. 10-15 couple of questions on all the concepts. होगा क्या ना कि रिमेनिंग 6-7 क्वेश्चन में भी 2-3 फंस जाएगा. रिमेनिंग 6-7 क्वेश्चन में भी 2-3 फंस जाएगा. यू फोकस मोर ऑन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, बट ज्योमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को ना देख लो, लाइक वन नाइट बिफोर द एग्जाम जैसे होता है ना, उस तरीके से देख लो. Don't completely ignore geometry. I would not recommend. You have 5 months left. 5 months में you need not to completely ignore any of the verticals. अगर 2-3 महीना होता तो शायद मैं बोलता, बट यू हैव इनफ टाइम. ठीक है, ट्रस्ट योरसेल्व्स. You guys need to trust yourselves. बाबा रन छोड़ दा चांचड़. How good is that?
So meanwhile next question pops up. सर अर्थमेटिक में एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं? 50, 50, 50, सॉल्व 50 क्वेश्चंस, जंप टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके, 50 क्वेश्चंस में आई विल बी मास्टर. अरे 50 क्वेश्चंस में यू विल गेट ओवरव्यू ऑफ द all the concepts. Okay, being master in a topic will take infinite time. Okay, still there are very bright chances ki I might get you in some question. 50 questions is what you can solve in a particular question and move to the next topic. ऐसा 50 questions के बाद कर सकते हैं. Okay, and you know what? Solve 50, 60, 50, 60, move to the next topic. Once you are done with that, now mocks में you automatically revise all of that. तो आप सीखते जाते हो. It's a perpetual process. 50, I said, Baba Ranchoddas, 50 questions में you can even solve 500. Arun Sharma के book में you have 200, 250 questions roughly. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑल्टरनेट एवरी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो. अरुण शर्मा के बुक से अगर कर रहे हो तो हर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो. 50-60 क्वेश्चंस आर गुड इनफ टू गेट द क्रक्स ऑफ दैट टॉपिक, टू गेट द क्रक्स ऑफ दैट टॉपिक. मीनवेल गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब, अभी ऑफर है, कर लो फटाफट till the next question pops. I'll explain this. कोर एमबीए कोड लगाओगे, कैट का बैच आपको मिल जाएगा 9999 में. वी आर स्टार्टिंग अ बैच फ्रॉम 1st of July, आई बिलीव. यस, अ न्यू बैच. I'll answer that. Just give me a second. And Pro, for 14999 में you get Pro. Pro is subscription to all the batches. CAT, SNAP, NMAT, CMAT, जो भी एग्जाम आएगा सबका बैच आएगा, सबका सब्सक्रिप्शन is in MBA Pro 14999. Or if you get call from top B school, money is also refunded in the form of ranker rewards. 2 साल का अगर 2026 टारगेट है तो go with MBA Prime. It is MBA Pro into 2 years. Benefit of MBA Pro into 2 years. Okay. Strategically focus karo. Numbers, data can win you battles. Okay, these days. Numbers देखो. 2024 में you have got 15-16 questions on an average from arithmetic and algebra combined. They dominate the paper every year. They dominate the paper every year, not only in 2024. History देखो, they dominate the paper every year. So if you want to restrict your preparation, you can restrict it to arithmetic, algebra and geometry as data suggests. Scratch batch काफी है ना. Scratch batch on YouTube is self-sufficient. All the three has been covered. हाँ, आपको practice करनी पड़ेगी थोड़ी. And आपको अगर doubts आएंगे तो उसके लिए you need some mentor. अगर आपके फैमिली में कोई बड़ा भाई या कोई दोस्त ऐसा कोई है which can constantly help with your doubts, scratch batch is self-sufficient. Sir, how much percentile in mock should be aimed for a gem candidate? अरे what question is this, निहार? समझा नहीं, आप शायद कुछ और पूछना चाह रहे थे. Gem candidate के लिए what percentile should be aimed? I mean 100 percentile. Anything above 99.5 at least. Gem candidate. Because when we talk, we don't think about anything other than top IIMs for the time being. Okay, for the time being, you keep your aspirations high, right? So for a gem candidate from general category, it has to be 99.5, 99 to get calls from IIMs. हाँ, mocks. How different is the mocks? Marks की बात करो फिर. मैंने percentile, if you talk about percentile, there is difference between percent and number of marks.
percent and percentile. Ah, trap is always there. But देखो, nobody can predict the future, but trend is the king. We should follow the trend. You should stick to the trend. निहार, रिफ्रेश योर क्वेश्चन. शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा बेटा. Cat is always unpredictable. Everything is unpredictable. But you should follow the trend. Trend is the king. जब ट्रेंड बदलेगा तो उसके बाद से we will follow the new trend. देखो, पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि टीटा के क्वेश्चंस और बढ़ेंगे, कैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ेंगे. आई मीन, चांसेस बहुत है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल इंक्रीज इन कैट. स्लाइड चांसेस इसके भी है, बातें इसकी भी हो रही है कि लेट्स कंडक्ट द कैट 2025 इन द ओल्डर फॉर्मेट. 3 घंटे का जो फॉर्मेट था. देयर आर मच टॉकिंग गोइंग अराउंड इन द कम्युनिटी. लेट्स सी, जो आएगा जब आएगा तब आएगा. टीटा क्यों बढ़ेगा सर? अरे टीटा बढ़ाना उनकी मजबूरी है. यू डोंट अंडरस्टैंड. Theta, number of questions in Theta have already increased drastically. Initially, 6 years ago, they used to ask 15%, 20% of the questions in the form of Theta. Last year, they have asked 8 to 9 questions in the form of Theta. Okay, Theta बढ़ाना उनकी मजबूरी है. They have the number of marks is less. Number of questions has reduced. तो number of marks has reduced. Initially 34 marks का होता था क्वांट. ठीक है. तो 34 मार्क्स का क्वांट होता था तो 102 मार्क्स होता था, राइट. 102 मार्क्स आपको देने थे 2.5-3 लाख स्टूडेंट को. बट नाउ द मार्क्स इज 66. मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेम मार्क्स. तो रैंक ऊपर नीचे करने के लिए ना, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टीटा. क्योंकि 4 ऑप्शंस है, यू मार्क द ऑप्शंस, राइट होने के चांसेस ज्यादा है. टीटा इज लाइक ओपन एंडेड ना. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टीटा फॉर द सेम थिंग. नहीं तो टीटा का और क्या रोल है यार, क्यों टीटा करते हैं? टीटा बढ़ाना इज गुड फॉर देम एंड गुड फॉर गुड स्टूडेंट्स. टीटा का बढ़ना इज गुड फॉर, ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड फॉर द इंस्टीट्यूट दैट इज कंडक्टिंग कैट. फॉर आईएम्स जो कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए रैंक रिफ्रेश करना इजी हो जाता है. एंड इट्स गुड फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड. समझो ना, दोस हु हैव वर्कड हार्ड विल गेट राइट आंसर इन टीटा. बट जिन्होंने नहीं किया है, दे आर इवन लूजिंग 25% चांसेस ऑफ गेटिंग इट राइट. रैंडमली आप एबीसीडी मार्क करते हो, कुछ तो करेक्ट होता है ना. सो दोस हैव नॉट वर्कड हार्ड, they are losing that opportunity as well. So Theta is good for two people, for the institute itself and those who have worked hard. मॉक्स कितने दे? देखो, ओवरऑल मॉक्स आई डोंट थिंक कि आपको 40, 50, 60 बच्चों के दिमाग में रहता है मॉक भर भर के देंगे. लास्ट के 2 महीने में यू शुड बी गिविंग 6 to 8 मॉक्स पर मंथ, एंड उसके पहले 2 to 3 मॉक्स पर मंथ. ओके. So in all, within the time we are left with 2 to 4, 3, 7, 7 and 14, close to 18 to 20 marks in coming 5 months. Majority of them should be in last 2 months. Majority of them should be in last 2 months. Chalo guys, quickly ask if you have anything else to ask. Focus on the syllabus. You know the weightage of each topic. Now focus on the syllabus. डीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलआर? ट्रेडिशनली देखो, ट्रेडिशनली ना एलआर का वेटेज ज्यादा होता था, बट लास्ट ईयर डीआई का वेटेज ज्यादा था. तो अभी यू डोंट से, बट अगेन इफ आई वर अ स्टूडेंट और बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग योर मेंटर, आई विल गाइड यू कि
if I pick topics, there are potential 4 to 5 sets in DIE. So if I would predict, there would be a set from orthodox graphs. When I say orthodox graphs, table, bar graph, line graph, pie chart, ये कर लेना, the basic ones जनरली आ रहा है आजकल, ठीक है. स्पाइडर कर लेना, सनबर्स्ट कर लेना, ठीक है. वॉल्यूम एरिया बेस्ड कर लेना, बट आई डोंट थिंक अभी आने के चांसेस है उसके, बट कर लेना. एक वहां से कर लेना. एंड एक क्वेश्चन ना वेन डायग्राम इस बार कर लेना अच्छे से, क्योंकि वेन डायग्राम वाज अ हॉट टॉपिक फॉर कैट. लास्ट 2-3 साल से आया नहीं है वेन डायग्राम्स. Many doubts have cleared. I am very glad. लास्ट 2-3 साल से वेन डायग्राम आया नहीं है, तो आई फील वेरी स्ट्रांगली कि इस बार वेन डायग्राम आना चाहिए. ठीक है, वेन डायग्राम कर लेना. ऑलवेज अरेंजमेंट एंड शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन रहता है, तो वो एक कर लेना. हो गया 3-4 सेट. बाकी कहीं से भी आ जाए, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क कंबाइंड दोनों से एक तो रहता ही है मोस्टली. दीज आर द मेजर एरियाज टू फोकस. नोप्स. अजय 10.75%, 12.74%, grad 57%. I'm very sorry to say the chances of getting call from Black is very less, beta. But there are other good colleges, other top B schools. एक्सेलराई टारगेट करो. एक्सेलराई में एकेडमिक का थोड़ा सा कम वेटेज है. दे फोकस लेस ऑन एकेडमिक्स. एंड देन एसपी जैन है, देन एफएमएस है, एमडीआई है, आईआईएफटी गुड़गांव है, आईएफटी दिल्ली है, एमडीआई गुड़गांव है. टारगेट दीज गुड कॉलेजेस. यहाँ पे एकेडमिक्स को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं. नहीं, Baba Ranchod Das attempt. If I were a student, if I have to make a prediction, I would say Venn diagrams this year is on. If I were to predict, I would predict Venn diagrams is on. Okay, Venn diagrams, orthodox graphs. Second, obviously arrangements and scheduling is always on the charts. ठीक है, and games and tournaments, routes and networks. These would be few topics I would go with. Don't skip. Don't skip. Chalo guys, we have to sum up the session. Do not forget, start preparing, stay ahead. If you don't have any guidance as of now, we have a new batch coming. Subscribe for MBA Pro, ठीक है, 14999. MBA Pro में I guarantee you cooperate with us, you will get your money back. You cooperate with us. Cooperate, when I say cooperate, just follow what is asked to follow in the session. Just cope up with the deadlines of the topics that we are teaching. And yes, you will be there. And when you will be there, as per policy, we would be refunding huge chunk of your money in the form of ranker rewards. So subscribe to the test book. Last May, I would say. Chalo guys. So I have to sign off now. We'll see you again. The time's up. It was a half an hour session. It went to 9:45, I believe, and I have to leave. Let's meet again in the regular sessions. Don't forget to follow us on our Scratch batch on YouTube. YouTube pe we conduct classes on daily basis. 5 p.m. Ritu ma'am is conducting VARC, and 7 p.m. ko I do conduct QA, and 9 p.m. ko Surana sir conducts DLR ke classes. Top educators of the country, Surana sir and Ritu ma'am are. They have got more than 10 years of teaching experience. Ritu ma'am has got 12 years. Surana sir has got 13 years. Huge experience they bring on the table. It's up to you how much to grab. All of us three combined, we bring 40 plus years of teaching experience on the table. Get maximum out of it. And yes. Chalo guys, signing off from this session. We'll meet again. Bye bye everyone.